ओके फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आइल्स का जो स्पीकिंग पार्ट है, स्पीकिंग पार्ट टू, दी टॉपिक दैट इज द क्यू कार्ड और लॉन्ग टर्म इन विच यू हैव टू स्पीक एटलीस्ट 2 minutes. So we're going to discuss about the same topic, that how we going to make or prepare the topic, how we going to break it down, and what are the rules and regulations that the IELTS examiner is looking, and what are the special parameters or marking criteria that examiner is going to assess, and he will look into your answer. So stay tuned, watch the video up to the end, and I will help you to gain perfect band 8 plus in IELTS speaking part 2, that is a Q card. So today we going to take a sample topic. The example topic is describe a uniform that you are wearing. अगर आप स्टूडेंट हो, आपने जो फर्स्ट टास्क में अगर आपने बोला कि व्हाट यू डूइंग, वहां पे आपने रिस्पॉन्स दिया आई एम स्टडिंग, तो आपके लिए क्यू कार्ड होगा डिस्क्राइब अ यूनिफॉर्म दैट यू आर वियरिंग। और सेकंड वे हो सकता है कि डिस्क्राइब अ यूनिफॉर्म दैट यू वॉर ड्यूरिंग योर स्कूल डेज। अगर आपने कॉलेज या वर्किंग दिखाया है तो सेकंड टॉपिक वुड बी डिस्क्राइब अ यूनिफॉर्म दैट यू वॉर ड्यूरिंग योर स्कूल डेज। और थर्ड वे हो सकता है डिस्क्राइब अ यूनिफॉर्म दैट यू आर वियरिंग एट योर वर्क प्लेस। आपके अगर ऑफिस में जहां आप काम कर रहे हैं वहां पे भी यूनिफॉर्म पैटर्न है तो उसके रिगार्डिंग भी आपको ये टॉपिक है पूछा जा सकता है। तो लेट्स से और लेट्स वर्क आउट के ये जो टॉपिक है डिस्क्राइब अ यूनिफॉर्म, तो कैसे शुरू किया जाएगा। दैट पहले आपको ये माइंड में रखना है, द फर्स्ट फॉरमोस्ट फॉर राइटिंग एंड स्पीकिंग में सभी बच्चों को बोलता हूँ, आई एम लाइक एडवाइजिंग ईच एंड एवरीवन टू हैव अ स्ट्रक्चर इन योर ब्रेन, दैट इज PPF। दैट फर्स्ट P स्टैंड फॉर प्रेजेंट, सेकंड इज फॉर पास्ट, एंड थर्ड F स्टैंड फॉर फ्यूचर। मीन्स के हम जब भी कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करें, आपको ध्यान रखना है उसमें ये तीनों टेंसेस आने चाहिए। थोड़ा बहुत पास्ट का डिस्क्राइब कीजिए, प्रेजेंट में आए, और आप जब कंक्लूजन में जा रहे हो तो उसे आप फ्यूचर टेंस में डिस्क्राइब कीजिए। तो अभी यहाँ पे ये जो क्यू कार्ड है हमारा, डिस्क्राइब यूनिफॉर्म दैट यू वॉर, दैट यू आर वियरिंग, और दैट यू आर वियरिंग एट योर वर्क प्लेस, वो कैसे हमें डिस्क्राइब करना है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है। सो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग, और खास आप वीडियो स्किप ना कीजिए, एंड तक दीजिए। और अभी तक आपने अगर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, एंड बेल आइकन प्रेस करना भूलना मत। जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के जो सब टॉपिक है, बुलेट टॉपिक, आपको उसके ऊपर फोकस करना है। जो बुलेट टॉपिक हो गए आपके हो गए कि लाइक व्हेन यू वेयर इट। आप अगर अभी कॉलेज में हो, यूनिफॉर्म नहीं पहन रहे, तो आपके लिए ये टॉपिक होगा कि व्हेन यू वेयर इट, आप कब उसे पहनते थे, एंड हु बॉट इट फॉर यू, आपके लिए किसने खरीदा है, एंड व्हाट डज इट लुक लाइक, वो कैसा दिखता था, द अपीयरेंस, ओके, द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ दैट यूनिफॉर्म, एंड हाउ यू फील when you were wearing the uniform, how you were feeling about the same। ये आपके बुलेट टॉपिक्स है। तो आपको ये अकॉर्डिंग टू दैट बुलेट टॉपिक्स आपको आपका जो आंसर है वो प्रिपेयर करना है। सो आपको जो आप जो ब्रेक डाउन कर रहे हो आंसर का, पहले द फर्स्ट इनिशियल पार्ट, द फर्स्ट पार्ट इज इंट्रोडक्शन पार्ट, के आप कैसे इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन पार्ट about the uniform. How you going to describe about uniform, and what are the grammatical range or the vocabulary or pattern do you have to keep in your brain। So पहला पार्ट है आपको वो फोकस करना है, दैट इज इंट्रोडक्शन। मीन्स के आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है व्हाट इज यूनिफॉर्म, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म, आप यूनिफॉर्म कैसे एक्सप्लेन करते हो। दैट यू हैव टू प्रोवाइड समहाउ नॉट एक्यूरेट और अ परफेक्ट डेफिनेशन, बट आई वुड एडवाइज यू टू एक्सप्लेन द वर्ड यूनिफॉर्म। ओके, सो दैट इनिशियली आप जब क्यू कार्ड शुरू करते हो, दैट आई बिलीव और इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, आप क्या क्या अपना पर्सनल व्यू पॉइंट डालिए। जब भी आप कोई भी आंसर के रिप्लाई करते हो इन क्यू कार्ड, स्पेशली स्टेट मत शुरू करना लाइक यूनिफॉर्म इज समथिंग एंड सो, डोंट गो इन दैट वे। आई वुड एडवाइज आप अपना पर्सनल व्यू पॉइंट
इसमें ऐड कीजिए, लाइक आई थिंक, आई बिलीव, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, इन माई परसेप्शन, इन माई ऑब्जर्वेशन, और एज फार एज आई कंसर्न, ऐसे आप शुरू कीजिए। तो लाइक आई बिलीव यूनिफॉर्म इज अ पेयर ऑफ क्लोथ्स। ओके, शुरुआत आप उसे के इंट्रोडक्शन में दीजिए कि आई बिलीव यूनिफॉर्म इज अ पेयर ऑफ क्लोथ्स which is mandatory for each and every students, or it is mandatory for each and every workers if it is a compulsion for the workers। आप स्कूल और कोई कंपनी दोनों को साथ में भी एक्सप्लेन करते हो तो ऐसे बोल सकते हो तो कि आई बिलीव और इन माय ओवरव्यू और इन माय ऑब्जर्वेशन यूनिफॉर्म इज अ स्पेशल पेयर और स्पेशली डिजाइंड कॉस्ट्यूम, स्पेशली डिजाइंड क्लोथ्स which each and every student while in school or each and every workers while in a factory or company has to or have to wear, each and every workers in a factory have to wear to improve, or it is like a to like show the sense of equality। ओके, आप ऐसे इंट्रोडक्शन दे दीजिए, शुरुआत में इंट्रोडक्टरी लाइन देना है, देन आप अपने ऊपर आ जाइए सीधा कि आप कब पहन रहे थे। आई स्टिल रिमेंबर, आप जब भी आपका पास्ट बोल रहे हो, व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग योर पास्ट, रिमेंबर, क्योंकि हमें पीपीएफ स्ट्रक्चर भी फॉलो करना है, तो उसके लिए यू हैव टू टेक द पर्सनल एक्सप्लेनेशन। सो आपने जब एक्सप्लेनेशन दे दिया, इंट्रोडक्शन ऑफ द title or the main topic that we have as a like uniform, so uniform, I believe uniform is a special pair or specially designed costume which has to be worn by either school students or by the company employee। आई स्टिल रिमेंबर, क्योंकि यहाँ आपको अभी आपका पर्सनल दिखाना है ना, क्योंकि आपको क्वेश्चन पर्सनली पूछा है, तो यू हैव टू डिस्क्राइब बाय लाइक यू नो इंट्रोड्यूसिंग योर पास्ट। So I still remember when I was in my school days, I used to wear uniform regularly from Monday to Friday or Monday to Saturday। अगर आपकी स्कूलिंग Monday to Friday है तो Monday to Friday, और if it is up to the Saturday so Saturday। तो क्या है कि जो पहला बुलेट टॉपिक है व्हेन यू वेर वियरिंग इट, व्हेन यू वॉर इट, तो कब आप पहन रहे थे, तो आपको यहाँ पे ये दिखाना है कि when I entered in the school from my primary section, I still remember when I entered in my primary school or my primary sections, क्योंकि आपने कब एडमिशन लिया वो यहाँ पे आप डिस्क्राइब कीजिए। So when I took the admission or when my father took my admission in so and so school, let's say for example PP Savani school, so my father took an admission for myself in PP Savani school, and when I was enrolled in the same school from my first standard, the first thing which my parent did was nothing but they purchased me a brand new uniform which I used to wear throughout the weekdays from Monday to Saturday, as it was mandatory, as it was compulsory for each and every student to have a perfect, neat and clean uniform to be worn throughout the weekdays। तो अपने when वाला जो पार्ट था, the part that when did you wear it, तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है। ओके, समझे आप? अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। I still remember those days or those glorious days। I still remember my past, ऐसे बोल सकते हो, या फिर I still remember my school days or I still remember those my glorious days। So ऐसे आपके आगे थोड़ा ornamental language यूज कीजिए। I would say the adjectives। नॉर्मली आप सेंटेंसेस जब बोलते हैं तो क्या नॉर्मल लगता है, आपका बॉडी लैंग्वेज या एक्सप्रेशंस या कुछ दिखेगा नहीं, बट व्हेन यू आर यूजिंग दो सम एडजेक्टिव्स or adverbs, it will add ornamental tone to your language and it would be more audible for the examiner। वो impress होगा आपसे and it shows the strong grip over the language from your side। Okay, so I still remember those still remember my glorious past, and it was the first day when my father took an admission or my parents took my admission at the PP Savani school from my primary section। The first thing they did was nothing but they bought me a new pair of uniform that I used to wear throughout the weekdays from Monday to Saturday, as it was mandatory for each and every school student to have it throughout the school days। My school was in a morning section from 7 to past half past 12।
तो आपका ये हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट। अभी नेक्स्ट पार्ट इज, आपने वो पहना था तो अभी यू हैव टू डिस्क्राइब अ बिट अबाउट द यूनिफॉर्म। यहाँ पे सभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अभी क्या करें, डिस्क्रिप्शन नहीं आती। तो डिस्क्राइब यूनिफॉर्म दैट डजंट मीन्स कि आपको वो क्या है, उसका कलर, उसका कॉटन क्या है, क्या बहुत ज्यादा नहीं कहना। जस्ट 2 or 3 लाइन वुड बी मोर देन इनफ, आई वुड से। क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या है कि मेन टॉपिक पे सीधा जंप करते हो आप। व्हेन यू आर जंपिंग ऑन अ मेन टॉपिक रादर देन डिस्क्राइबिंग द सराउंडिंग आइडियाज, दैट विल बी अ लैक ऑफ योर कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस ड्रॉप होगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक मोर, और आप ब्लैकआउट हो जाते हो। सो आई वुड एडवाइज, उसका जो डिस्क्रिप्शन है कैसे होगा। आई एम गिविंग यू सम सैंपल एग्जांपल लाइक हाउ इट वाज लुकिंग, हाउ वाज योर यूनिफॉर्म, ओके। एंड आई स्टिल रिमेम्बर, आप यहाँ से शुरू करते हो। एंड अगर आपको एक पार्ट जो यहाँ पे लिंकर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने एक आंसर जो था लाइक व्हेन यू वर वेयरिंग इट, लाइक व्हेन यू वॉर इट, व्हेन डिड यू वेयर इट, तो ये आंसर आपने दे दिया। इंट्रोडक्शन दिया, वी स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन दैट यूनिफॉर्म इज समथिंग एंड सो अ सेंस ऑफ इक्वालिटी, अ सेंस ऑफ प्रेजेंटेशन, आप जो भी देना हो दे दीजिए। देन हमने शुरू किया कि व्हेन आई वॉर इट, so I still remember those golden or glorious or precious days that when I was in my school, I used to wear the uniform throughout my weekdays. I still remember when my father took my admission at the PP Savani school, which is located in the southern part of Surat, and the school is one of the most precious school in my city. थोड़ा बहुत आप जो भी नाम बोलते हैं ना उसमें कुछ भी डालो, तो उसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन साथ में डालते रहिए। तो कि क्या है कि फॉर द एग्जामिनर आई वुड से वो सारे के सारे आइडिया क्लैरिफाई होते हैं। तो वो हो गया। देन आपको अभी बोलना है द डिस्क्रिप्शन ऑफ योर यूनिफॉर्म, क्योंकि एक हमारा बुलेट टॉपिक है हाउ इट वाज लुकिंग, वो कैसा दिखता था। तो जब आप एक बुलेट टॉपिक खत्म करते हो दूसरे पे आते हो, स्ट्रेट अवे मत आइए, वहां आप एसोसिएटिव लिंकर्स डालिए। द लिंकर्स विल हेल्प यू टू बूस्ट अप योर स्कोर। अगर आप 7 बैंड पे हो, लिंकर्स डालते हो, तो आपका स्कोर है वो हो जाएगा 8। एक बैंड सीधा प्लस होता है, वो मैंने देखा है कई बच्चों को जिन लोगों ने यूज किया है और जिन्होंने नहीं किए हैं। देयर इज अ क्लियर डिफरेंस इन बिटवीन द लिंकर्स एंड इडियोमेटिक लैंग्वेज। आपको इडियम्स, क्लोजेस, फ्रेजेस जहां पॉसिबल हो आप लगाइए, ओके। हाँ, बाय फोर्स नहीं। दैट idiomatic language has to be used naturally, not by force, not artificially। देखिए ये बात आप खास याद रखिए। अगर हो सके तो ऐड कीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो इट्स फाइन, ओके। आप क्लोजेस, फ्रेजेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वहां पे फोकस कीजिए। तो अभी दूसरी आइडिया कैसे ऐड करें, लाइक इफ आई वांट टू डिस्क्राइब अबाउट अ यूनिफॉर्म, ओके। एक ए हो सकता है कि इफ आई वांट टू डिस्क्राइब अबाउट द यूनिफॉर्म इट वाज सो एंड सो। और सेकंड में ये हो सकता है कि लेट मी डिस्क्राइब द यूनिफॉर्म, और यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया कि लेट मी डिस्क्राइब द यूनिफॉर्म, फुल स्टॉप। और तीसरे ये भी हो सकता है कि इफ आई वांट टू डिस्क्राइब द यूनिफॉर्म इट वाज सो एंड सो, लेट मी डिस्क्राइब इट। आप ऐसे क्या करें कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आप सडनली जंप ना हो, तो उसे इंट्रोड्यूस कीजिए कि अभी मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ, लाइक नाउ। ये भी कह सकते हैं आप कि लाइक लेट मी और इफ आई, और अभी ये बोल सकते now I'm going to describe about my uniform, or now I'm going to give you a briefing about my uniform, how it was looking। फिर आप उसका डिस्क्रिप्शन दीजिए कि the uniform which I used to wear was a blazer, a trouser, shirt and tie, okay। It was nothing but just a mixture of a blazer, a trouser, shirt and tie। The blazer was blue in color। आपको सेपरेटली क्या है, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए। अगर आपको लग रहा है कि डिस्क्रिप्शन आपको डिफिकल्ट लग रहा है, डोंट वरी। डिस्क्राइब जो आपका करना है, मेक इट अ स्मॉलर सेंटेंसेस, द सिंपल सेंटेंसेस, नॉट इवन कंपाउंड और नॉट इवन कॉम्प्लेक्सेस, मेक इट सिंपल। कैसे करना है, on this occasion I'm going to describe about my uniform which I used to wear exactly during my school days। The uniform was having a 4 pair or 4 part। First is the blazer which was blue in color, second is a trouser which was black in color, and the shirt which was white। And moreover I used to wear a tie, that was also compulsion, or it was also my school was too strict to have a complete pair of uniform।
So tie was red in color. बस वो उतना ही बोलना है. अगर ज्यादा बोलोगे it was in so and so cotton and all that, नहीं. अभी क्या करना है, इतना बोल दिया. If you feel that discomfort that is not enough, so आप चले जाइए comfortability. Okay, the comfort zone that you were fearing or you were facing or discomfort through with the help or like through the uniform. तो आपने यहां तक हो गया डिस्क्रिप्शन. अभी कंफर्ट डिस्कंफर्ट जोन पे चले जाइए कि आई रिमेम्बर द यूनिफॉर्म दो और इट ऑल्दो. आपको क्या क्या सडनली कॉन्ट्रास्ट सेंटेंस देने हैं, तो दो ऑल्दो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए कि तो इट वाज द मोस्ट कंफर्टेबल ड्यूरिंग रेनी सीजन एज वेल एज ड्यूरिंग विंटर. क्योंकि रेनी और विंटर में कंफर्टेबल था, बट during monsoon it was bit uncomfortable because of the blazer. When I used to wear a blazer, I was feeling it was like it's too hot and I was feeling lot of uncomfortability. Okay, बस इतना बोल दीजिए, खत्म. और आपको आगे क्या बोलना है, तो अभी सीधा कंक्लूजन पे आ जाए. क्या करना है, आपने इंट्रोडक्शन पार्ट दे दिया. आपने वो जो अभी क्या है, रूटीन में अगर आपको कुछ और ऐड करना है तो आप ये बोल सकते हो कि the school had the compulsion that we have to perform or we have to wear the perfect neat and clean and completely washed uniform, completely iron uniform, completely pressed means IRONED iron uniform, इसको अस्त्री किया हुआ. Okay, and each and every year I remember each and every year my mother, either my father, okay, either और करेंगे, या मेरी मॉम या मेरे डैड, दोनों में से एक मेरे साथ आता है और हम यूनिफॉर्म खरीदते हर साल लेते. ये आप थोड़ा बहुत डाल दीजिए. ईच एंड एवरी ईयर बिफोर बिगिनिंग ऑफ द ईच एंड एवरी सेमेस्टर. Okay, before I start my semester, before I start my year, or before beginning of each and every semester, either my father or my mother used to come with me. Used to like either और डाल दिया, कॉम्प्लेक्स हो गया. used to come मेरे साथ आते थे, हर साल हमने बोला है, तो used to come. पास्ट में जो कोई एक्टिविटी रेगुलरली होती हो तो वहां हम फ्रेज यूज करते हैं used to. अगर प्रेजेंट में है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, लेकिन पास्ट में रेगुलर तो used to होगा. So I still remember or I have an idea. I never forgot those days or those days are still in my memory. आप ऐसे ऐसे डिफरेंट वे से प्रिपेयर कर सकते हो. Before the beginning of each and every new semester, either my father or my mother used to come or used to accompany me to purchase a new uniform from the one of the most famous shop. One of the most, one of, like there was a shop, simple sentence over, like there was one of the most. ओके, तो क्या हुआ, सुपरलेटिव डिग्री हो गई. सिंपल सेंटेंस होगा अगर हम बोले कि देयर वाज अ शॉप लोकेटेड टू माय हाउस और लोकेटेड नियर टू माय हाउस. सिंपल सेंटेंस है. अगर इसे कॉम्प्लेक्स बनाना है तो देयर वाज अ यूनिफॉर्म शॉप which was one of the best or one of the most famous uniform shop which was located near to my house. So which was located stone throw away from my house. लोकेशन है जब कुछ exactly near है तो idiomatic language, idiom है stone throw away, एकदम नजदीक होना, quite near. Okay, so आप बोल सकते हो कि before the beginning of each and every new semester, either my father or my mother used to accompany me to the one of the most famous uniform shop which was located stone throw from my house, and they helped me to purchase a new uniform, a brand new uniform every year, which I used to wear every year. The shop has a quality because they had or they used to prepare the uniform or they used to prepare tailor-made and most comfortable, not only tailor-made but also the most comfortable uniforms for the student. As I was growing physically every year, क्योंकि मैं हर साल बड़ा हो रहा था, so as I was growing physically every year, I had to change my uniform every year. आप यहाँ से शुरू करो और माय फादर और जो मदर वाला सेंटेंस उसे आइदर पहले या फिर बाद में डालिए. I still remember or I still remember those continuous journey of my education. Okay, I have an idea or I have still those glorious memory or wonderful memory remain in my brain or I still remember those days. आप कैसे भी शुरू कीजिए कि I used to grow
or as I was growing physically every year, and because of that reason, I had to change my uniform before beginning of each and every semester. And due to that reason, either my father or my mother used to accompany me or used to join me or used to help me to purchase a new uniform from one of the most reputed as well as famous uniform shop, which was located stone throw away from my society. ओके, यहाँ हो गया। अभी आप डिस्क्राइब कीजिए दी यूनिफॉर्म शॉप। द यूनिफॉर्म शॉप वाज फेमस नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स टेलर मेड, not just because of their tailor-made uniforms, but also they used to or they were preparing the most comfortable uniform for each and every student. आपने नॉट ओनली बट ऑल्सो डाल दिया, थोड़ा बहुत शॉप्स के बारे में बोल दिया, तो आपका आराम से 15-20 सेकंड का ये भी हो जाएगा। Again, I am going to repeat the same thing. I have those memory in my brain. I still have those memory in my brain that when I enrolled in the first time in the school during the first year, I wore the same uniform for at least a year. And as my second year or second semester began, as I used to or I was growing physically by every year and year, I had to change my uniform throughout the my academic journey by each and every year, and because of the great reason, or due to that, or because of that, either my father or my mother used to accompany me or used to help me to purchase a new uniform after each and every semester or before beginning of each and every new year. There was a most famous and reputed. There was a most famous and the reputed uniform shop located near to my society. So located stone throw away from my society, and we used to or we were purchasing the uniform from the same shop regularly because अब यहाँ पे आप उसकी क्वालिटी डाल लीजिए because the shop was famous for not only providing the tailor-made uniform but also the most comfortable pair of school uniform. पहले आपने सिर्फ यूनिफॉर्म बोला, अगेन आपको क्या रिपीट करना है, तो पेयर ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म एडजेक्टिव डाल दिए, तो क्या है कि वैरायटी ऑफ वोकेबुलरी आपकी क्रिएट होगी। यहाँ हो गया। अभी सीधा आप जंप कीजिए कंक्लूजन पार्ट में, द एंड पार्ट ऑफ योर टॉपिक। एंड में क्या आप बोलेंगे? सिंपल है, आई हैव दिस मेमोरी और लाइक थोड़ा बहुत यूनिफॉर्म के बारे में आपको अगर बोलना है कि यूनिफॉर्म क्रिएट्स ए सेंस, और आपको ऐसे भी आता है ना, कैसे है लाइक राइटिंग पार्ट में कि ईच एंड एवरी स्कूल स्टूडेंट आर वियरिंग यूनिफॉर्म or it is a compulsion for each and every student to wear uniform, so what do you think, they should wear it or not? ऐसे यूनिफॉर्म का भी आता है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आप बोल सकते हो उसके बारे में कि uniform is a special costume. I believe it creates a sense of equality, brotherhood among students and also in workers. अभी कंक्लूजन डाल दीजिए और यहाँ पे आपको डालना है फ्यूचर। आपने शुरुआत में थोड़ा बहुत प्रेजेंट डाला, मेजोरिटी आपका जो क्यू कार्ड था पास्ट में गया, अभी फ्यूचर टेंस डालना है। पीपीएफ कैसे डालेंगे? ओके, सो अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलते मैं फिर से पहनूंगा, सिंपल, आई विल वियर इट। एक सेंटेंस आपने डाल दिया तो जो फ्यूचर टेंस की रिक्वायरमेंट है वो क्लियर हो जाएगी, मैं इसके एग्जामिनर सेटिस्फाइड हो जाएगा। कैसे बोलेंगे? आई स्टिल रिमेम्बर, वहां से आपने शुरू किया, फिर आई रिमेम्बर दोस डेज, तो यहाँ डालिए कि लकीली और फॉर्चुनेटली if I get the same opportunity again, I want to wear the same uniform and I want to feel the same comfort zone and the same sense of equality. Okay, ऐसे बोल सकते हो। या फिर if I get the opportunity, क्योंकि if वाला जो है कंडीशनल क्लॉज आएगा तो भी आपकी ग्रामर की रिक्वायरमेंट है क्लियर होगी, और फ्यूचर टेंस भी डाल सकते हो कि if I get the opportunity, I will wear the same uniform again and want to feel the same emotion, सेम ग्रेटिट्यूड एंड सेम फीलिंग विथ माय फ्रेंड्स। ओके, तो ये जो कंक्लूजन पार्ट है ना, आपको यहाँ से शॉर्ट एंड स्टेट अवे आपको क्या है कि क्लोजिंग पे चले जाना है। बहुत ज्यादा डिस्कशन करना, ये रह गया वो रह गया, कुछ आप सोचिए मत, स्टेट अवे द कंक्लूजन और रिलैक्स होके कीजिए कि इफ आई हैव द अपॉर्चुनिटी और इफ आई गेट द सेम चांस, सेम अपॉर्चुनिटी, आई विल वियर द सेम यूनिफॉर्म एंड वांट टू फील the same glorious days, claim glorious moments, or want to feel the same emotions with my friends. And यहाँ हो गए। और अभी आपको कुछ रियल सिचुएशन दिखानी है, फ्यूचर में थोड़ा ज्यादा,
तो आप ये भी बोल सकते हो कि अभी मैं ये पढ़ाई कर दिया है, कर रहा हूँ, या फिर यहाँ जॉब कर रहा हूँ और यहाँ से शिफ्ट होके वहां जा रहा हूँ, तो वहां पे यूनिफॉर्म है और वो जो मुझे पहनना पड़ेगा तो मुझे सेम फीलिंग मिलेगी। ओके, तो वो बोल सकते हो कि करंटली अगर आप वर्किंग कर रहे हो तो ये सेंटेंस हो सकता है कि एज ऑफ नाउ और करंटली आई एम बीन वर्किंग with Microsoft, or like I've been working with ABC company since last 3 years, and for my future prospect, I'm looking to get a shifting or looking to shift from another company which has a uniform is a compulsion, or the company has a dress code, a compulsory dress code. So I will wear the same uniform, and when I will move there, I will be wearing uniform throughout my weekdays. तो कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस हो गया कि आई विल बी वियरिंग। ओके, और अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हो कि एज ऑफ नाउ आई एम इन द फाइनल ईयर ऑफ माय ग्रेजुएशन ऑफ बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एंड once I'll finish my education, I will be joining Google as a junior software developer, and it is a famous that Google has uniform as a compulsion for each and every worker, whether they are a junior employee or a senior. It is a mandatory or compulsion, or it is a compulsory for each and everyone to have a same dress code throughout the working days. So I will be wearing the same uniform, and I will be feeling the same sense of equality which I used to face or which I was feeling through my school days. तो आप ऐसे कंक्लूजन कर सकते हो। ओके, तो ऐसे अगर आप क्यू कार्ड प्रिपेयर करोगे तो क्या रहेगा, इजी रहेगा आपके लिए आइडिया प्रिपेयर करना कि आपको क्या करना है। लेट मी गिव यू अगेन द रिपीटेशन और ऑल द आइडिया। फर्स्ट क्या करेंगे, दैट you will provide an introduction for the uniform, the topic that we have। topic का आप introduction दीजिए थोड़ा बहुत अपने हिसाब से, not the professional definition, but आप क्या समझते हो उसके बारे में, आपको क्या आइडिया है, what do you know about that topic, a bit introduction about the topic, that uniform is something, I believe in my point of view, uniform is something and something which creates like is nothing but a special piece of or a specially designed costume। ओके, एंड आई स्टिल रिमेम्बर, फिर आप चले जाए आपकी पास्ट ईयर, आपकी बैक हिस्ट्री में। आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई टुक द एडमिशन इन माय फर्स्ट स्टैंडर्ड, my parents did the first thing which they did, which they purchased like a brand new uniform for me, and I used to wear it throughout my school days, from Monday to Friday or from Monday to Saturday. And initially I was feeling bit uncomfortable, but as I grew, as my maturity grown up, or when I become, or as I mature gradually, I grew, or I feel that it is nothing but just a sense of equality. And initially I used to hate the uniform, but as I grew mature more, I started loving my uniform, as it was nothing but sense of equality, and it was a proud moment for me when I used to wear the uniform। थोड़ा बहुत ये बोल दीजिए। बाद में आप थोड़ी बहुत ये भी स्टोरी डालिए कि जैसे मैं बड़ा हो रहा था, like as I grew or I was growing physically every year, and it was for me mandatory to purchase a new uniform before beginning of each and every semester. My parents used to help me to purchase a uniform from some location. The most important location is like a uniform shop. They were expert in designing. They were expert in tailor-made uniform, most comfortable cotton and all that. The stone throw away, the distance of something, और उसके बाद में आपका थोड़ा बहुत इमोशन। तो आप ऐसे क्या है कि वन बाय वन एक एक स्टेप्स याद रखिए। आप कोई भी टॉपिक हो ना, तो उसके लाइक सेंटेंसेस एक साथ नहीं, उसकी स्टोरी बनाइए, उसे जो टॉपिक है उसे डिवाइड कीजिए, अलग अलग डिवाइड कीजिए। मान लो आपने एक टॉपिक के 4 5 या 7 टॉपिक, लाइक सब टॉपिक बनाए हैं, इसके बाद ये, इसके बाद ये। In case while you are in front of the examiner, when you are appearing for IELTS speaking test, and you feel that you forget some topic, you forget some idea, you forget some lines, you forget some word, if in case, so don't worry for that। आप क्या बोलने वाले हो, what you are supposed to speak in front of the examiner, उसे नहीं पता, he don't know about your, like he cannot read your brain। ओके, सो आप अगर कुछ भूल जाते हो, जस्ट लेट इट गो, एंड दूसरे आइडिया पे सडनली आप जंप हो जाए। That jumping from one idea to another idea, from one location to another location is a mandatory and crucial for you। So आप ऐसे ही प्रिपेयर कीजिए, आपका टॉपिक ऐसे प्रिपेयर कीजिए कि जो आइडिया एक्सप्लेनेशन सिंपल हो, और आप अपनी ग्रामर, अपनी वोकेबलरी, द लेक्सिकल रिसोर्सेज, आई वुड से द इडियोमेटिक लैंग्वेज, योर एक्सप्रेशंस,
योर सेंस ऑफ प्रेजेंटेशन, योर बॉडी लैंग्वेज, योर मूवमेंट्स, उसके ऊपर फोकस कीजिए। एंड मोर ओवर दी फ्लैट टोन, मोनोटोन, उसके ऊपर भी खास वर्कआउट कीजिए कि जो भी बच्चा लाइक एग्जामिनर के सामने बैठ गया और बोलने लगेगा आई स्टिल रिमेंबर दोस डेज व्हेन आई वाज लाइक इन माय स्कूल, माय फादर परचेज मी अ स्कूल यूनिफॉर्म, तो ऐसे आपको स्कोर नहीं आएगा। You have to take a genuine and relevant pauses in between each and every sentences, either before some words, special words. You have to stress your sound. आपको आपका साउंड जो है उसके ऊपर भी वर्कआउट करना है। एंड एज आई टोल्ड यू मैनी टाइम, इसके रिलेटेड मैंने एक स्पेशल वीडियो भी डाला है कि आपके एक्सप्रेशंस, योर फीलिंग्स, योर इमोशंस कैसे काम करते हैं, कैसे आपका प्रेजेंटेशन को लाइव बनाते हैं। लाइव प्रेजेंटेशन वो आपको वहां पे करना है, तब जाके आप जो टारगेट कर रहे हो 8 और 8.5 और इवन 9, तब जाके आपका जो स्कोर है वो परफेक्ट स्कोर आपको मिलेगा। तो आज का जो टॉपिक था यहाँ पे हम खत्म करते हैं। अगर आपको इस आइदर ऑन दिस टॉपिक आपको कोई सिंपल आंसर चाहिए तो मैं नीचे कमेंट्स में इसका सिंपल आंसर डाल दूंगा। और इसके अलावा व्हेन यू आर फीलिंग और व्हेन यू गेट स्टक विद सम स्पेसिफिक टॉपिक फॉर आइल्स स्पीकिंग, स्पेशली क्यू कार्ड 2, द पार्ट 2, द लॉन्ग टर्म, तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको रिवर्ट कर दूंगा और उसके रिलेटेड भी नेक्स्ट टॉपिक में वो कवर कर लूंगा। सो स्टे ट्यून, कीप वाचिंग आवर YouTube channel R International, and still if you haven't subscribed the channel, I would request you to subscribe it and like it, share it to maximum students who are struggling to get a good score in IELTS. So stay tuned, and thank you so much for being with us, and most importantly, keep watching our channel and keep watching R International to secure a good band score in your IELTS.